हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स राइस या कोलंबी भात। तो देखिए कैसे बनता है प्रॉन्स राइस। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन किया है। हमें एक बाउल प्रॉन्स लेने हैं, कोलंबी लेना है और उसे मैरिनेट करना है हल्दी और सॉल्ट के साथ, नमक के साथ। 4 प्याज लेने हैं, अच्छे से काट के लेने हैं। खड़ा मसाला लेना है, इसमें तेज पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, लवंग, स्टार अनाइस, काली मिरी, ये सब लेना है। आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। लगभग 1.5 किलो लॉन्ग बासमती राइस लिया है मैंने। इसे 2 घंटा अच्छे से धो के पानी में सोक करके रखना है। 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट,
देखिए हमारा प्रॉन्स राइस तैयार है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए रूपालीज़ किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू।